Of class 10. So today we are going to start the topic sexual reproduction in plants. Okay, shall we continue? Join as early as possible. It's 7:31 p.m. Biology, how do organisms reproduce? The topic is sexual reproduction in plants. Shall we start today's session, students? Okay, fine, fantastic. Hi, good evening. So, in the previous video, we have completed asexual mode of reproduction. Okay, the chapter name is how do organisms reproduce. So, in how do organisms reproduce? In reproduction, there are two types: asexual reproduction, sexual reproduction. Asexual reproduction we have seen in detail in previous videos. Okay, so today that is sexual reproduction. First in plants we will see, afterwards in humans. Okay, yes, shall we start? Yes, please, if you are having facing any doubts, any clarifications, if you want, please just comment in the comment section. Okay, so please give heart and likes also. Let's begin. Sexual reproduction in plants. In plants, flowers are the reproductive parts or organs, we can say. Which are the reproductive organs in the plants? Flowers. Everybody, you have to remember this one. Okay, flowers are the reproductive organs. Next, a typical flower consists, means a normal flower. Typical flower means normal flower. Consists of four main parts, students. Which are the four main parts? Sepals, petals, stamen, pistil. So, sir, it is difficult to remember. Very easy. I will tell you, I will make you easy. Okay. Suppose you take one hibiscus flower. Hibiscus flower. Okay. So, the below the flower, the green leaves like structures will come. Those are called as sepals. Okay. Sepals. Remember, sepal. This one, the green color. Next, petals. The colorful will be there in the flower. It will be present. Na? Flower. In the flowers, colorful things will come out. Na? Those are called as petals. Green color which are coming down, which are present below, those are called as sepals. And the different colors are present in different flowers. Those are called as petals. Clear? Stamen. Stamen means what, students? It is a male part. Male. So which are the male parts here? See, one long supportive structure which is coming. That is called as filament. What we call, students? We call it as a filament. So this is filament. Are you getting? So this round color structure which are present, so many, okay, 1, 2, 3, 4. So these round color structures, these are called as anthers. What are these? These are anthers. Here male gametes are present inside this anther. When you touch the flower, some yellow color or some small structures which will attach to our hands, those are called as male gametes actually, pollen grains. Pollen grains are present inside the anther. This is anther, this is filament. This is filament, this is anther. So both together, it is known as male reproductive organ, that is called as stamen, students. What we call? Stamen. S-T-A-M-E-N. Stamen it is. Okay. What is stamen? Filament, anther. Anther, filament. Both together it is known as stamen. It is a male reproductive part in flower. So which is the female reproductive part? So this one, stigma, it is called as stigma. So this is called as style. So it is present like this. Style it is. Stigma, style, ovary.
the bulged structure which is present inside ovary. Inside the ovary, ovules are present, students. Small female gametes will be present inside. Female sex cells which are present inside. Here male sex cells are present inside the anther, pollen grains. Female gametes are present. Gametes means nothing but sex cells. So these are present inside the ovary. Those are called as ovules. The bulged structure is called ovary. Inside the ovary, ovules are present, and the structure which is coming out from the ovary, that is called as style. Okay, and the above, the part which is present above this style, this is known as stigma. Stigma, style, ovary, ovules, these are called as female reproductive part. It is called as pistil, or we can say carpel, female. And writing the symbol here, male symbol, female symbol. Over, this much only. Sepals, petals, stamen, pistil. Sepals, green color. Okay. Petals, different types of colors are present in different flowers. So sepals, petals, and next one is stamen. Stamen is this both these parts are called stamen. One is filament, another one is anther. Anther and filament both together, it is known as stamen. It is a male reproductive part. Remaining what? Pistil. Pistil means what? Stigma, style, ovary, and ovules. Ovules. So these all are the parts of female reproductive part. So it is called as pistil or carpel. Sepals, petals, stamen, male, pistil, female, stigma, style, ovary, ovules, pistil. All together it is known as female reproductive. Pistil or carpel, simple, very easy. Are you getting, students? Yes. So this is about what? If we take any one hibiscus flower, if we cut like this in the middle, so this is known as longitudinal section of flower. Longitudinal section of flower. Inside it is like this. Inside it will be like this. Ovules we cannot see from outside the flower. We have to cut in the middle. Exactly middle. If we cut, we can see the ovules inside the ovary. Fine. So what is this, students? Just now we have seen a typical flower consists of 4 main parts. Sepals, petals, stamen, pistil. Okay. So in higher classes when you go, these 4 main parts, different name is there. Another name is there. Calyx, corolla. This is androecium. And the female part is known as gynoecium. Okay, fine. In higher classes, in PUC, if you take science, so there will be 4 holes: calyx, corolla, androecium, gynoecium. Calyx means sepals, corolla means petals, androecium means male, stamen, anther and filament. Gynoecium means female part, stigma, style, ovary, ovules. Clear? Fine. Okay. Now, types of flowers. There are 2 types of flowers. Just wait, I am seeing the comments here in the comment section. Rukmini Sangam, hi sir. Hi Rukmini Sangam. Thank you so much for your valuable comments. So please give like and hearts. So there are 2 types of flowers are there, students. How many types of flowers are there? 2 types of flowers are there. Unisexual flower, bisexual flower. Some flowers, they are having only male or female reproductive part. Actually this is a bisexual flower I have shown you. Okay, so male and female both are present only in one flower. So this is a bisexual flower. Bi means what? 2. 2 sexes are present. Male and female, both sexes are present in one flower. Bisexual flower. Some plants, some flowers
are having only the male reproductive part. Another flower only female reproductive part. Those are called unisexual flowers. So by this we can conclude that flowers are of two types: unisexual flower, bisexual flower. Okay, so let us see types of flowers: bisexual flower and unisexual flower. What do you mean by bisexual flower? Already I have explained you. Both male and female reproductive parts are present in same flower. In that single flower, both male and female reproductive parts are there. Just now we have seen. So these types of flowers are called bisexual flowers. What are bisexual flowers? The flowers in which both male and female reproductive parts are present, those type of flowers are called what? Bisexual flowers. Examples are hibiscus and mustard. मस्टर्ड आप सभी लोगों को पता है, सासिवे, राई बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? राई, जो तड़का में डालते हैं ना, ब्लैक कलर का रहता है, ब्राउन कलर का रहता है, तड़का में डाल दिए तो चटपट चटपट करता है ना, राई, और सासिवे इन कन्नड़ा, मस्टर्ड इन इंग्लिश. सो मस्टर्ड एंड हाइबिस्कस सभी लोगों को पता है, तुम लोगों को, जो गणपति को चढ़ाते हैं, फ्लावर, दाशवाड़ा हुआ कन्नड़ा में कहते हैं. ओके, सो हाइबिस्कस and mustard, these are the both are the examples for bisexual flowers. So many are there. Okay, just two examples are enough. Next, unisexual flower. The flower in which either male or female reproductive part is present is called unisexual flower. Example is papaya, watermelon. papaya आप लोगों को पता है, papaya जब भी फूल खिलता है ना, it may have only male or female. Any one reproductive part will be there in one flower. So watermelon is also an example. Okay, papaya, watermelon, both are the examples for unisexual flower. How many types of flowers are there? Two types of flowers are there. One is unisexual flower, another one is bisexual flower. The unisexual flowers are the flowers in which either male or female reproductive organs are present. Examples are papaya and watermelon. The flowers in which both male and female reproductive organs are present, those type of flowers are called bisexual flowers. Examples are hibiscus, mustard. Fine, clear? ये सभी लोगों को आपको पता चल गया है, फ्लावर के बारे में पता चल गया है. हाइबिस्कस फ्लावर, ओके, ये जो है टिपिकल हाइबिस्कस फ्लावर से. सो इस सेपल से ना काम क्या करता है स्टूडेंट? सेपल, इसका जो हम इसका फंक्शंस देखेंगे. सेपल का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल? जब भी बड स्टेज में रहता है, जब भी फूल अभी नहीं खिला हुआ रहता है, अभी फूल बड स्टेज में है, इना ಮೊಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮೊಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಪಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. These sepals will protect the flower in bud stage. अभी फूल नहीं खिला हुआ रहता है ना, जब ये प्रोटेक्ट करता है. कौन प्रोटेक्ट करता है? सेपल्स प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट, ये पेटल्स का फंक्शन क्या है? कलरफुल क्यों रहता है? ये पॉलिनेशन होने के लिए. What do you mean by pollination? मेल गैमेट्स आके फीमेल गैमेट्स के साथ जो क्रॉस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं. The transfer of pollen grains are male gametes. The transfer of pollen grains from anther to the stigma is called pollination. Pollination is very very important. तुम लोग ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर. What do you mean by pollination? The transfer of pollen grains from anther to the stigma is called पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के अंदर दो प्रकार है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन. अभी देखो, इफ pollen grains are transferred from anther to the stigma of the same flower, उसी के फ्लावर से मेल का गैमेट फीमेल का गैमेट के साथ या स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ गया तो सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं.
सिंपल है। अगर ए एंथर्स ट्रांसफर होके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ गया समझो, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल, क्लियर। ये पॉलिनेशन क्यों होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द टॉपिक इटसेल्फ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। In plants, where does the reproduction takes place? Flowers. Why? Flowers are the reproductive organs. Clear है? Easy है? Okay. Pollination कैसा होता है स्टूडेंट्स? हवा आता है ना, हवा के साथ when air blows at the time the what pollen grains will transfer. हवा से हो सकता है। इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स। ये पेटल कलरफुल रहता है ना, कलरफुल। एक कलर अंदर नेक्टार रहता है स्टूडेंट्स, नेक्टार एक खुशबूदार लिक्विड रहता है, जूस रहता है। सो इंसेक्ट्स आके ना चूसने के लिए आते हैं, दे वांट टू सक द नेक्टार, द इंसेक्ट्स विल कम। इंसेक्ट्स को लग के है ना पॉलिनेशन हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। इंसेक्ट्स भी मदद करते हैं पॉलिनेशन के अंदर। वाटर, जब भी रेन आता है, पानी डालते हैं, पानी के वजह से भी ये मेल गैमेट से फीमेल गैमेट के साथ मिल सकता है, यानी तो स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ सकता है। क्या? मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स कहाँ रहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? स्टेमन है। स्टेमन, व्हाट इज प्रेजेंट इन स्टेमन? एंथर, स्टिग्मा। अभी है ना फीमेल गैमेट्स अंदर है, खाली ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टिग्मा के ऊपर आके बैठ जाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। अगर यही एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं अंदर आके फ्यूज हो गया समझो फीमेल गैमेट के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वी विल सी आफ्टरवर्ड्स, जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। सेपल्स का काम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर इन बड स्टेज। पेटल्स का काम क्या है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, बीज, डिफरेंट बर्ड्स, स्मॉल बर्ड्स अट्रैक्ट करने के लिए ये है ना पेटल्स कलरफुल रहता है फ्लावर्स के अंदर। और ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट व्हाट इट विल डू? इट विल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। ओव्यूल, ओव्यूल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स, सेक्स सेल्स। मेल गैमेट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो मेल सेक्स सेल्स क्या है? वो है पॉलन ग्रेन्स। What we call students? Pollen grains. They contain male sex cells which are present in male reproductive part. समझ में आ रहा है? Okay. So please you just see here. Just I want to check comments. Define the term of matter of substances. Sandeep. Matter of substances. Explain sir these two. Actually according to the topic I am teaching, according to the topic if you ask the question it will be the better. So Sandeep ji, you have commented, no problem, very thank you so much for your valuable comment, I appreciate it. But define the term of matter or substance you are asking. Okay, no issues. When chemistry topic, that topic will be going on, I am going to explain you neatly because the topic is going here. That is sexual reproduction in plants. Okay, if you are having any doubts regarding to this topic, you can ask. No issues. Okay. So let's continue this topic, students. Process of seed formation. Seed कैसा तैयार होता है? Fruit कैसा होता है? ये जब भी ये प्रोसेस है ना, फूल खिलता है ना, खिलने के बाद जो मेल गैमेट्स आके फीमेल गैमेट के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव के साथ पार्ट में मिल गया तो पॉलिनेशन है। वो जो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स कंबाइन हो गए तो फर्टिलाइजेशन होता है। बाद में क्या होता है अभी जो देखेंगे हम लोग। सीड्स कैसा प्रोड्यूस होता है,
फ्रूट कैसा बनता है, वेरी वंडरफुल टॉपिक इज देयर. लेट्स सी हियर प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन. It will all these things will come here only, just connection is there. Just look here. Pollen grains produced in the anther. I have written pollen grains. Pollen grains क्या है, मेल सेक्स सेल से. वेयर, ये कहां प्रोड्यूस होता है, एंथर के अंदर. Pollen grains produced in the anther are transferred to the stigma. Pollen grains produced in the anther are transferred to the stigma of same flower. Same flower is called self-pollination. If the anthers are transferred to the stigma of the another flower, different flower, that is called as cross-pollination. How it will transfer? Through the agents like air, water और एनिमल्स. एनिमल्स मतलब क्या है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स. ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. क्या हो गया है, मेल गैमेट आके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर बैठ गया है. अभी फ्यूजन नहीं हुआ है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन अभी नहीं हुआ है, सिर्फ आके बैठा है इसके ऊपर. इसके ऊपर आके बैठ गया है. वो क्या है, पॉलिनेशन. उसका फ्लावर का ही एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स आके इधर बैठ गया तो ऑटोमेटिक आके नहीं बैठता है. एयर, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स से हेल्प से आके बैठ जाता है. इसको हम सेम फ्लावर रहा तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा फ्लावर रहा तो क्रॉस पॉलिनेशन. सेकंड पॉइंट, pollen grain germinate and form pollen tube. देखो ये पिक्चर के अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा है. इधर जब भी pollen grain आके बैठता है ना उधर, उसके अंदर का वो थोड़ा खुल जाता है, मेल गैमेट थोड़ा खुल जाता है. उसके अंदर का जो सेल है वो इधर आके बैठने के बाद एक pollen ट्यूब क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स. इसके अंदर एक ट्यूब क्रिएट हो जाता है. इधर से है ना आके एक ट्यूब, अंदर से ट्यूब, इट विल ग्रो स्टूडेंट्स. सो दिस इज व्हाट chemotropism we have studied in the chapter control and coordination. Control and coordination, we have studied 4 different types of tropism, 5 different types. Hydrotropism, again what, hydrotropism, phototropism, geotropism, thigmotropism, chemotropism. Chemicals release करता है. So one pollen tube will produce, new pollen tube will grow. pollen tube क्यों चाहिए? ये जो मेल सेक्स सेल है ना उसके अंदर से जाके फ्यूज होना चाहिए. मेल सेक्स सेल है ना जाके उसके अंदर फ्यूज होना चाहिए. That's why pollen tube is produced. Okay, let's see this picture first. First try to understand here. जो आके बैठा है वो जो pollen grain है ऊपर, और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है, स्टिग्मा है. स्टिग्मा, what is produced inside after when pollination? pollen tube will form. pollen tube will form. किधर pollen tube किधर फॉर्म होता है? ओवरी के ये जो स्टाइल के अंदर ओवरी को कनेक्शन हो जाता है. ओके, सो ये जो पार्ट है ओवरी है. ये जो पार्ट है ना आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो पार्ट है ओवरी है. देखो इधर ओवरी आपको दिखाई दे रहा है, ओवरी, ये जो ओवरी. इनसाइड क्या है, अंदर क्या है, फीमेल सेक्स सेल्स है. वो क्या है, ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स. This diagram is also there for your examination. This diagram is also there for your examination. You people have to practice these diagrams. Okay, daily one diagram you have to practice. 10th class students, daily one diagram, 10 minutes, hardly it will take 10 minutes. Not only the same diagram, daily one different diagram you have to practice. Then in examination it will become very easy. Daily one diagram, 10 minutes. Okay, pollen grain, stigma, pollen tube, ovary
इनसाइड व्हाट आर देयर, ओव्यूल्स आर। ये जो मेल सेक्स सेल है ना, पॉलन ट्यूब के अंदर से आके फीमेल गैमेट के साथ मिल जाता है बाद में। लेट्स सी हियर, द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट, इधर आके है ना जर्मिनेट हो जाता है, खुल जाता है, पॉलन ग्रेन फट जाता है, अंदर का जो एक मेल गैमेट रहता है ना, द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट एंड फॉर्म पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब बन जाता है, विच पास थ्रू स्टाइल, स्टाइल से अंदर चले जाता है, टू रीच अप टू ओव्यूल्स। ये मेल गैमेट आके पॉलिनेशन हो गया, जर्मिनेशन हो गया, पॉलन ट्यूब बन गया, स्टाइल से अंदर से वो पॉलन ट्यूब के अंदर से ये मेल सेक्स सेल आके फीमेल सेक्स सेल के साथ फ्यूज हो गया। Pollen grain germinate and form pollen tube which pass through the style to reach up to ovules present in the ovary. Ovary के अंदर जो ovules के रहते हैं ना, उधर आके फ्यूज हो जाता है। The fusion of what is fertilization, आपके एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। The fusion of male and female gametes is called fertilization. Fertilization मतलब क्या है, जो मेल गैमेट आके फीमेल गैमेट के साथ मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस डायग्राम व्हाट दे आस्क इन योर एग्जामिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, दिस इज जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, दिस डायग्राम दे मे आस्क, एंड दिस इज longitudinal section of flower. Draw a neat diagram of hibiscus flower. Okay. ये फ्यूज होने के बाद क्या हो जाता है, मेल फीमेल गैमेट मिलने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो गया, बाद में सेल्स डिवाइड होने लगते हैं, सो दैट इज कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवरी, male and female gametes fuse and they start to divide, more cells will form, that is called as zygote students. Changes in the seed, wait, zygote is produced in the ovary, okay, zygote divides to form embryo। मैं अभी बोला ना, जो zygote बहुत सारा सेल बन के छोटा सा जीव बन जाता है, life will form, that is called as embryo students। embryo means a very small life, okay। zygote divides to form embryo, ovule develops thick coat and changes into seed। ये जो ovules रहता है ना, वो seed बन जाता है students। प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, ovule क्या बन जाता है, एक थिक कोट बन जाता है, सीड बन जाता है। Ovule develops thick coat and changes into seed gradually। gradually मतलब थोड़ा एम्ब्रियो ग्रो होके वो सीड बन जाता है। Ovary changes into fruit। फ्लावर के कौन से पार्ट फ्रूट बनता है, ओवरी। रिमेंबर एवरीबडी, ओवरी। हम जो फ्रूट देखते हैं आजकल, खाते हैं फ्रूट, वो क्या है, वो ओवरी है। फ्रूट के अंदर सीड्स जो होते हैं ना, वो क्या है, ओव्यूल्स स्टूडेंट्स, फीमेल गैमेट्स। ये ओव्यूल क्या बन जाता है, सीड्स बन जाता है, और ओवरी क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है स्टूडेंट्स। ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट, so this is also very important। ovary changes into fruit and other parts of the flowers fall off। ये जो क्या है, स्टेमन है। स्टेमन मतलब क्या है, फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, पेटल्स, बहुत सारे बाकी चीज नीचे गिर जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिमेनिंग पार्ट्स विल फॉल ऑफ, गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, सूख जाता है। Ovary changes into fruits and other parts of the flowers fall off। Next, seed germination to form a plant। जो भी सीड है ना, वो सीड्स हम मिट्टी में डाल दिए, तो मिट्टी के अंदर ये सीड्स को डाल दिए तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, सीड जर्मिनेट हो जाता है, नीचे रूट्स आता है, ऊपर शूट आ जाता है, इसको लीफ हो जाता है, लीफ बन जाता है, नीचे
रूट हो जाता है, ऊपर शूट बन जाता है. सो सीड जर्मिनेशन टू फॉर्म ए प्लांट, नया प्लांट बन जाता है. कब बनता है? अंडर सूटेबल कंडीशन. मिट्टी के अंदर डाल दिए तो, पानी डाल दिए तो, उसको हवा मिलना चाहिए. बहुत अंदर डीपली वी डू नॉट हैव टू पुट द सीड. थोड़ा सा मिट्टी निकाल के सीड डाल के थोड़ा ऊपर मिट्टी डाल के पानी डालना चाहिए. सो प्लांट seed germination to form a plant under suitable conditions such as air, moisture, etc. etc. मतलब सनलाइट, मॉइस्चर, पानी भी चाहिए उसको और हवा भी चाहिए. मॉइस्चर मतलब क्या है? वाटर, पानी. ओके, सो दिस इज व्हाट प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन. सीड कैसा बनता है, फ्रूट कैसा बनता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, how the reproduction will takes place, what is pollination. Today we have seen so much things. Sexual reproduction in plants. Understood everybody? Is it clear, students? A quick revise I am going to make here. Okay, so sexual reproductions, there are in plants, there are two types. Sorry, sexual reproduction in plants, flowers are the reproductive organs. Okay, and flowers consist of four main parts: sepals, petals, and the male one is called as stamen, and the female reproductive is called pistil. Clear? So there are two types of flowers are there: unisexual flower, bisexual flower. The flower which contains only either male or female reproductive part is called as male reproductive part or male flower. Unisexual flower, examples are papaya, watermelon. The flowers in which both male and female reproductive organs are present, those type of flowers are called bisexual flowers. Examples are hibiscus, mustard. So this is the flower. So next, seed formation कैसा होता है स्टूडेंट्स? पहला जो पॉलन ग्रेन रहता है ना, मेल गैमेट आके इधर आके फ्यूज हो जाता है स्टिग्मा के साथ, इधर आके बैठ जाता है हवा से, इंसेक्ट से, या नहीं तो एयर से. एयर, एनिमल्स, वाटर, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं. सेम फ्लावर के ऊपर आके बैठ गया तो सेल्फ पॉलिनेशन. ये जो मेल गैमेट्स, पॉलन ग्रेन्स जाके दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठ गए तो क्रॉस पॉलिनेशन. बाद में पॉलन ग्रेन क्या हो जाता है? जर्मिनेट होता है और पॉलन ट्यूब बन जाता है. बाद में क्या हो जाता है? ये पॉलन ट्यूब से है ना, जो मेल गैमेट आके इसके साथ फीमेल गैमेट्स ओव्यूल्स है ना, उसके साथ मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. बाद में जाइगोट बनता है. जाइगोट डिवाइड होके होके एक एम्ब्रियो बन जाता है, छोटा सा लाइफ. ये एम्ब्रियो क्या हो जाता है? डेवलप होके होके होते सीड बन जाता है. सीड एक्चुअली ओव्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू सीड्स and that ovary is converted into fruit. Other parts will fall off. Simple है, easy है. वो जब भी सीड हम मिट्टी के अंदर डाल के थोड़ा सा पानी मार के रख दिए तो जर्मिनेशन हो जाता है. जर्मिनेशन मतलब क्या है? जो सीड है ना, फटके ऊपर शूट आता है, नीचे रूट जाता है, उसको क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं. कब होता है? सूटेबल कंडीशन, अच्छा हवा पानी रहना चाहिए. प्लांट जब बड़ा होता है उसको धूप मिल गया तो बस है, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर प्रोसेस से वो खुद प्रिपेयर कर लेता है खाना और झाड़ बड़ा बन जाता है. फिर से बड़ा होने के बाद फ्लावर्स रिलीज करता है. फिर सेम प्रोसेस विल टेक्स प्लेस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. So understood today's topic, students? I think you have understood the today's topic. So thank you so much for your wonderful comments and watching the live session from Shri Gopal Kulkarni YouTube channel. So daily watch 7:30 p.m. So biology and chemistry. So I will make you very perfect in biology and chemistry. Understanding the making you topic very easy, and some important questions also I am going to give you. So please subscribe, like, comment and share to your friends, those who are in class 10. So until then, keep watching, keep learning. Take care, students. Bye bye.